everybody? How is everyone? Ji, so Sarsie is here, and we'll, as you can see, I'll show you just like this. Sarsie ने बहुत काम किया है आपकी देखें सारे क्वेश्चन सबके आंसर प्रिपेयर करके लेकर आए हैं. So we hope that the people who are waiting list expectantly. To get their answers today. Yes, so we will get their answers today. Yes. Inshallah. So let's start with without much ado. Yes. I will start first of all with the healthcare visa. Because that's where a lot of questions were asked last week. Yes, so healthcare visa के मुतालिक सारसी बताएंगी क्योंकि लास्ट वीक हेल्थ केयर के मुतालिक बहुत से क्वेश्चन हमें आए थे तो आज उनके जो है आपको जवाबात मिलेंगे. Yes, Sarsie. So for the healthcare visa, the people who are eligible for the healthcare visa, one is a qualified doctor, another is a nurse, a health professional, or if you are in adult social care. Okay. So जी अगर आपका NHS में है जैसे कि मेडिसिन से आपका लिंक है फिर आपको जो है मिल सकता है हेल्थ केयर वीजा लाइक अ डॉक्टर नर्स health professional or adult social care professional. So you offer these types of care. Yes. So you already have to be in one of these categories. Yes. So what I'm going to do, I'm going to share the link with you guys as well. So I'm gonna just, how shall I do this? So I will do on Sarsie ने मेरे साथ कुछ लिंक शेयर किए हैं. So I'm going to share those links with you all. जहाँ जो जॉब्स के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन जॉब्स, the links. So there are few links. You have to look for the jobs yourself. Yes. Because our service is only immigration. It's not job search. But to assist, I have gone to look for where they provide the jobs myself for skilled worker visa. So you can try any of those. I can't guarantee success, but I know those are the routes, the job search routes. So I've just shared them with you. Okay, so सारसी कह रही है कि जो उन्होंने लिंक मेरे साथ शेयर किए थे वो मैंने आप सबके साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिए हैं. आप वहां जाकर अपनी मतलब जॉब ढूंढ सकते हैं. तो होपफुली इंशाल्लाह ताला आपकी लक अगर काम कर रही होगी तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी. मैंने लिंक शेयर कर दिए हैं इंस्टाग्राम पर, आप उनको कर सकते हैं. Sahel ji, doing nice job by awareing people about UK visa rules and other things related with visa. That's Maninder Kaur. She just said that. Oh, thank you. But if you get any of those jobs, remember to come back to me to do the visa. Yeah. Only joking. Yeah, that's right. Only joking. So saying hi Roma, hi Sarsie, hello. Yeah, hi. तो yes जी, तो आप बस ट्यून इन रहे. आज सबके जो क्वेश्चन हैं जो सारसी प्रिपेयर करके लाई हैं, शी इज गोइंग टू गिव द आंसर. आई एम सलमा. यस जी सलमा, आपकी भी बात आज होगी. शी सेड आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट अस? Yes, we will. Okay, great. Yes, guys, I'm going to shoot. Without much ado, I'm going to start quickly, and then you can answer your questions. Yeah? Yes. So still we're on the healthcare visa. Yes. Yeah? So once you've got one of these professions, you have to be practicing in those professions for some time. So it can't be just today you got the qualification and tomorrow you're doing the application. They want to know that you've got some experience in any of those categories which I just mentioned, in any of those areas. Yes. Then after that, you find the UK employer. I've put out the routes. You've sent the routes. Yes. And then once you get the job, they will give you the certificate of sponsorship. And then so these people who are on those lists, they already know what the minimum salary is. Okay. Because there's a minimum salary. So if you have all those 4 things which I've said, then come back to me and then we go ahead with the visa application. Yeah. So Sarsie कह रही है, so for your work आपको at least couple of years you have to work. Some experience. It doesn't say how होना much. चाहिए. ये नहीं कि आपने अभी क्वालिफाइड किया है एंड देन यू अप्लाइंग. नहीं, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने NHS में या आप डॉक्टर बने, आपको 6-7 महीने हो गए हैं, हेल्थ केयर में 6-7 months हो गए हैं, और इवन बीइंग अ नर्स और मिडवाइफ, व्हाटएवर इट इज, you have to have your experience. Yes. And the links that I gave you, they are all skilled workers. So they take people from in the country, but that's what they do. They already know the whole process of taking people outside the country, because that's what they do. Okay, so सारसी कह रही है कि जो लिंक इंस्टाग्राम पे शेयर किए गए हैं आप लोगों के साथ अभी,
वो स्किल्ड पीपल जिनके पास एक्सपीरियंस है वो आपकी जॉब जो वो उन लोगों को ऑफर करते हैं। अगर आपके पास आप स्किल्ड हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको जो है जॉब जरूर मिलेगी। सलाम एवरीवन, टुडे सारसी विल टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, दैट्स यू, दैट्स फाइन। या दैट्स फाइन। तो चलें जी, आप जो है सारसी की बातों को गौर से सुने। You will get a lot of benefit and very good advice today, inshallah. And then the last thing is the knowledge of English. So you need to be able to speak English. Yeah, English must है जी, English आपको आनी चाहिए। अगर आपको English नहीं आती, then you are in a problem. You must learn how to speak English before you apply for any job, any application, और कोई कोर्स कुछ भी हो, उससे पहले आपकी English fluent होना जरूरी है। And then you can stay for 5 years. That it will be for 5 years. You can renew it, but after 5 years, you can also apply for indefinite. तो 5 साल आप यहाँ के काम कर सकते हैं, फिर अपना आप वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं मजीद 5 years, और उसके बाद आप अपने लिए इंडेफिनेट while you working on work permit you can apply for indefinite. Yes, after Yes. the 5 years. After And if the you 5 don't want years. to apply for indefinite, you can extend your visa if you meet the requirements same. जी जी, तो अगर आपने वीजा एक्सटेंड करना है अपना वर्क परमिट का वो कर लें, नहीं तो आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, सो Okay, guys. So that's the healthcare visa. ये हेल्थ केयर वीजे के बारे में अभी आपको बताया गया है। तो प्लीज अभी जो है मैंने लिंक शेयर कर दी है। आई विल ट्राई लिंक मेरे से on word on I will do that after the live inshallah. Okay. Then we're going to go to the skilled worker visa. स्किल्ड वर्कर वीजे पे जी अब रोशनी डालेंगे। So again, the skilled worker visa, you can be skilled in many. So it's not like one, the healthcare, it's everything apart from healthcare, skilled worker visa. And I've given those links as Yes, well. yes. So it will say skilled worker visa, then it will say they give so you know that this company, Yes. they deal with foreigners Okay. and migrants. तो जो स्किल्ड वीजा है जी वो आप कोई सा भी हो सकता है, टीचिंग में हो सकता है, एनी स्किल यू It's कैन all बी is in शेफ। it. All is in it. Yeah, and it's all in the list. लिस्ट में है जो मैंने अभी लिंक नहीं शेयर किए, उसमें आपको नजर आएंगे कि स्किल्ड वीजा जो है वर्कर वीजा वो जरा डिफरेंट है टू योर हेल्थ केयर वीजा। Yes, and they've given the price, the salary, and everything is on the link, and the job, the availability. So you click on it, Yes. and then you can apply. ओके, तो जो मैंने लिंक शेयर किए ना आपके साथ इंस्टाग्राम पर, वहां आप लिंक पर क्लिक करें। आपको खुद ही ये थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी कि कैसे जॉब वहां फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर हैं तो यू हैव टू गो इन टीचिंग के कैसा है। इफ यू आर लॉयर और अ शेफ और अ टैक्सी ड्राइवर और व्हाटएवर यू Click आर, on it. क्लिक ऑन इट, और वो आपको जो है गाइड Those करेंगे। are the vacancies. They are vacancies ready looking for people. हाँ, तो वो हैं जॉब्स निकली हुई हैं। कहते हैं ना जी दुकान खुली जिन्हें गाहक आन गए उन्ना बेहतर है। तो ये मैंने आपको एक दुकान खोल के दी है तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए कौन सी जॉब जो है इसमें ढूंढते हैं। और यहाँ आपको मैंने वो पेज शेयर किए हैं जिसमें ये शो हो रहा है कि ये वाली वैकेंसी जो है अवेलेबल है। Then you have to pay. So the fee is from about 719, between 719 and 1,500 pounds. तो जो फी है इसकी 719 पाउंड से लेकर 1,500 1500 पाउंड तक है जी। सो yes, depending on your circumstance. So once you get the job, Yes. let us know, and then we'll go to stage 2. लिंक कहाँ है जी? लिंक मैंने चैट में शेयर किए हैं। अगर आप स्क्रॉल करें ऑन द टॉप यू विल सी, मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले जी लिंक शेयर कर दिए थे। Then you have to pay the health surcharge of £624 a year. सॉरी, व्हाट डिड यू से? 624, the NHS fee. सो एनएचएस की जो फीस है वो है जी 624 पाउंड ईयर, जो कि आपने पे करनी है। इफ यू You आर have medical access to NHS for free. सो फ्री, ये आपको After you've paid this for but you have to pay when you're applying. It's part of the application fee so after that for the next following years you don't have to pay. for 2.5. So if you get it for 5 years, Yes. then you will have to do 624 times 5. Okay. Which you will pay in advance. But that means once you arrive in the UK, as soon as you have anything, you can just go to. ओके, सो जो वर्क परमिट वीजा है उसके लिए जो एनएचएस की फीस है वो 624 पाउंड पर ईयर है। Yeah. फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको इमरजेंसी हो जाती है, यू ब्रोकन योर टो और फिंगर और एक्सीडेंट और फीवर got a और flu. फ्लू कुछ भी,
तो आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि यू ऑलरेडी पेड £624 पर ईयर। अगर आपको 5 ईयर का वर्क परमिट वीजा मिलता है, यू हैव टू पे दिस इन एडवांस। Exactly. When you pay the application fee, it जब will आप be at the bottom. एप्लीकेशन की फी जमा कर रहे होंगे But तो we ये will be doing that. You just need to make sure your money is ready. यस तो सारसी कह रही है अगर आप सारसी के पास आते हैं, लिबर्टी सोलिसिटर से कांटेक्ट करते हैं, सारा पेपर वर्क ये करेंगे, यू जस्ट हैव टू पे द फी एंड यू हैव टू पे फॉर एनएचएस द मनी जो रिक्वायर करते हैं उसके लिए। बाकी सारे काम जो है आपके वो जो है सारसी और इनकी टीम वो खुद करेंगी। And then in addition, you need to show that you have money to support yourself. So they say at least £1,270. तो जी 1270 पाउंड एडिशनल आपके अकाउंट में होने चाहिए, इसलिए कि वो ये शो करे कि दैट यू कैन लुक आफ्टर योरसेल्फ, यू कैन ईट, यू कैन गो आउट एंड अबाउट, Yes. उसके लिए फॉर योर ओन लिविंग। Yes, कि and आप that's the fee they require. तो उनके लिए उनकी फी जो रिक्वायर है 1270, but that should be in the person account or you have to pay that as well। No, no, no. That should just be in your account. तो ये 1270 ये आपके अपने अकाउंट में मनी होनी Usually for चाहिए। 28 days. हाँ 28 दिन के लिए ये होनी चाहिए कि आपके ये अकाउंट में मौजूद है कि यहाँ आके आपको At कोई least, प्रॉब्लम ना हो। yeah. एटलीस्ट At least 28 days, yeah. So Yes. that's just to show that you can, unless now there's something called a shortage occupation list, that it can be a little lower, but go जो with है this, हाँ go जी with this. roughly. 1270 That should be पाउंड your आपके guide. अकाउंट में होने चाहिए अगर आप वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आफ्टर पेइंग ऑल द फीस फॉर एनएचएस आपके अकाउंट में जो मनी रिमेन होनी चाहिए Yes, बाकी की exactly. 1270 होनी Yes. चाहिए। Yes. Okay. Then the next thing that I wanted to say, yeah, you must have, yes, it should be there for 28 days. Then, so if you're coming with your partner, if you want to come with your partner, then you need this amount Yeah. plus an extra If we go 285. back on this question, the money 1270, they say that the fee, so that should be like a money Left over, gradually. like you said. Last 28 days bank statement, this money should be in. Yes, so Yes. it should be untouched. तो जी ये एक महीने की है स्टेटमेंट जो चाहिए है, जो भी आपको बता रहे हैं ना, एक महीना के 1270 पाउंड, ये नहीं कि पिछले 6 मंथ की स्टेटमेंट 28 days in चाहिए। a row. हाँ। 28 days in a row. तो है 28 डेज पूछेंगे कि जी आपकी इस मंथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग नेक्स्ट मंथ, यू अप्लाइंग फॉर दिस, ये अभी जिस महीने से हम गुजर रहे हैं ये आपने शो करनी है कि आपके अकाउंट में मनी मौजूद है। यस Yes. Okay. So, and then if you're coming with your wife, then this 1270 you have to add plus 285. ओके तो So अगर there has आप to be an अपनी extra हाँ, 285 if you're coming with your wife, you and your wife. अगर आप अपनी वाइफ As your के साथ आ रहे dependent, हैं, your partner as a dependent, whether man or wife, husband or wife, whichever is the spouse. ओके सो अगर आप अपनी वाइफ के साथ, फियांसी के साथ आ रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 285 जो है पाउंड पे करने पड़ेंगे विद 1270 दे नीड टू बी शोन इन द अकाउंट। Yeah. यस तो 1270 पाउंड जो आपके अकाउंट में मौजूद हैं उसके साथ 285 भी होने चाहिए आपकी बीवी के लिए, फियांसी के लिए, और कि ये मनी उसकी स्पेंडिंग है for her living basically। Yes, so that you, because it's your dependent, so it means you have got an extra 285 to support the spouse. बिल्कुल, तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी कि 1270 के साथ यू मस्ट हैव 285 पाउंड अगर आप अपनी वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ आ रहे हैं, सो टू शो दैट you have money for her as well। Exactly. Then if you have a child, then it's going to be plus another 315, one child. Yeah. One child. तो अगर आप अपनी बीवी के साथ साथ अपने एक Husband, बच्चे को wife, भी one लेकर child. आ रहे हैं, वन ओनली फॉर वन चाइल्ड इज एक्स्ट्रा आपके बैंक में 315 पाउंड भी होने चाहिए। सो जी 1270 आपके, प्लस फॉर योर वाइफ और स्पाउस 285, एंड फॉर वन चाइल्ड इज 315। And then if you have 2 children or more, then for every extra child, Yeah. you have to pay plus an extra 200 per child. तो अगर आपके साथ फॉर एग्जांपल आप हैं, आपकी वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, तो आपके अकाउंट में आपके लिए शो होना चाहिए 1270 फॉर वाइफ, 285, एंड फॉर ईच चाइल्ड 2 और 3 और 4 जितने भी बच्चे हैं उनके लिए 200 पाउंड होने चाहिए आपके अकाउंट में कि आप शो करें कि आई हैव इनफ टू सपोर्ट देम, बट
You only need to show them 1 month bank 20, statement, yeah. 28 Yeah, days. yeah, 28 yeah. दिन की स्टेटमेंट दिखानी है. Untouched. That money should be, it's not part of this one. हाँ, ये मनी जो है ये सिर्फ बैंक स्टेटमेंट है जो कि प्रोवाइड करनी है जब आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है कि ये मनी इनफ आपके पास है कि यहाँ आके आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे. यू आर एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द मनी यू हैव इन योर ओन अकाउंट. Yes, so this is for your first year. Yeah, when Yeah. you want to come. तो Immediately ये before you फर्स्ट come. ईयर का बताया है हमने आपको. फर्स्ट ईयर के जो एक्सपेंस क्या हैं. Yeah, and then same as in this one, you can do it for 5 years, and after 5 years you can either extend or you can either look to apply for settlement. यस, तो 5 साल के बाद अगर आपको वर्क परमिट का वीजा मिलता है. सो व्हाट इज द प्राइस फॉर वर्क परमिट वीजा? आई थिंक वी जस्ट एक्सप्लेन्ड. Yes. So if you have the application fee, yeah, that's the standard fee. So it will be either 719 or 1,100. So you should be expecting to pay between 719 and 1,500 plus 624 per year. पर ईयर. Yes. तो That's what you're जी looking at. जो वर्क परमिट वीजा की फी है वो स्टार्ट होती है स्टैंडर्ड फी फ्रॉम 719 पाउंड से लेकर 1,500 पाउंड तक. प्लस आपने पे करने हैं 24 624 पर ईयर सालाना फॉर योर NHS. आपके जो या आपको उसकी फी होती है जो आपने सालाना पे करनी होती है 624 पाउंड. So if you're looking to come for 5 years, Yeah. then it's going to be 624 times 5 Right. So you have to pay 5 year this one in in advance. In Oh, advance. तो Because जी- it's part of the application. सो अगर आप 5 ईयर के लिए वर्क परमिट वीजा पर आ रहे हैं सो फॉर योर NHS आपकी हेल्थ केयर की जो चार्जेस हैं 624 पाउंड पर ईयर. पर अगर आप 5 इयर्स के लिए आ रहे हैं तो आप इनको ऐड करने ईच ईयर कितने बनते हैं 624 और ये आपको एडवांस में पे करने पड़ते हैं. तो ये लॉट ऑफ अमाउंट. It's a lot of money. Yeah, lots of It's money. a lot of money. Yeah. But the thing is, if you have the job, Yeah. you will be able to afford. Yes. And some people, if they want you badly, Yeah. they're going to pay for it. Okay. Yeah. If they really, really want you. So the company in the shortage, pay- they don't have to. Yeah. But if somebody wants you, Yes. yeah. The reason I'm saying that is the people on the list, if you look on that list, Yeah. these are people who want people Yes. out from outside the UK. So they invest in that as well. Yes. I don't know how much the specific company, because I don't know the specific companies. I've just gone online to look for you. So Yeah. But this is the cost. तो This is the एक मैं cost. पॉइंट शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपको जो मैंने लिंक शेयर किए हैं वहां आप जाते हैं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं मे बी आपकी कंपनी आपके NHS की फी पे करे मे बी वो आपके जो चार्जेस हैं जो आपने यहाँ पे करने हैं आपके एप्लीकेशन के वो पे करें. अगर वो नहीं करते तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि लुक वी डोंट हैव दैट मच बट इफ यू कैन हेल्प अस आउट दे माइट हेल्प यू आउट. If they want you, depending on how much they want you. बिल्कुल अगर तो वो चाहते हैं कि आप आएं और उनको आपकी शदीद ज़रूरत है तो वो ये चार्जेस जो है आपके लिए ज़रूर वो आपकी इनमें हेल्प करेंगे. Because the list that I've given you, right? Yeah. It's the list of those in the UK, they already have a shortage. Okay. And that's why they're making room Okay, for for people people. outside. Because otherwise they will just take people in the UK, no Yes. hassle. Yes. Yeah. So for them, the- it's profitable. Yeah. And that's why they do it. So if you look on the links if you click on it, Yes. you will see Yes. that it says skilled worker visa, skilled Yes. worker visa, If skilled you worker go visa. on Gmail, on Sarsie's email, copy all the link and will you share Yes. on the YouTube here? Let's one share after it, the other. guys. Yes. So जी सारसी ने ये लिंक नहीं मिले. उमर हयात आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक नाउ. मैं अभी लिंक शेयर करने लगी हूँ आप सबके साथ ऑन द YouTube. तो सारसी ने जो लिंक शेयर किए हैं आपके साथ उसमें सिर्फ वो लिंक हैं जिनमें जॉब्स अवेलेबल हैं और लोग चाहते हैं कि उनको वो हायर करें क्योंकि इंग्लैंड में यहाँ शॉर्टेज है उन लोगों की. वो उनके लिए नहीं मतलब कि उनको मिल रहे इसलिए वो बाहर से जो है दूसरे मुल्कों से लोगों को हायर कर रहे हैं. तो लिंक जो मैं शेयर करूँगी आप अपनी एजुकेशन के मुताबिक अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक व्हाट काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस जो है आपके पास है उसके हिसाब से अपनी जॉब के लिए अप्लाई करें. सो द लिंक शेयर होने लगे हैं नाउ ऑन यूट्यूब. जस्ट डू द शॉर्ट वंस. जो शॉर्ट वाले हैं वो हम करते हैं. टेल मी अबाउट स्टडी वीज़ा. जी आपको स्टडी वीज़े का हमने
Abhi, let us And finish. then, yes, let's finish. And then please know that the jobs that I've given you, they're just my research because we don't do that. But because so many questions are coming, I decided to go and look for online the ones who have these vacancies. So that's just the result of my research. Yes. I can't guarantee anything, but I know that these people have vacancies. No, life is not finished, Hina Amir. Life is not finished. तो सारसी कह रही हैं she have given her time to you guys कि उसने अपना टाइम दिया है सर्च करने में. That wasn't her job to do. लेकिन क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट इतनी थी, so many questions, कि हम जॉब कहाँ से फाइंड करें. So Sarsi, thank you so much for doing that. You're You've been welcome. very very helpful on with this. कि सारसी ने खुद सर्च करके वो जॉब्स के जो ये लिंक हैं यहाँ जाकर सारी रिसर्च की है. Even though this is not part of her job, लेकिन क्योंकि वो आप लोगों की हेल्प करना चाहती है, तो I'm sharing these links with you. Great. Yes, so Great, thank you great. so much, Sarsi, You're for doing welcome. this. I'm going to rush on Yes. to the Hong Kong because these are questions that are coming. Okay. Yeah. So now, the people who can apply for the visa from Hong Kong. Yes. Yeah. So the conditions are you have to be a British national overseas to come to the UK. If you're in Hong Kong, you already have to be a British national overseas. So Okay. you would know that from your own status if you're Okay. just a Hong Kong citizen or if Okay. you're a British national overseas. Overseas. So जो हांगकांग से लोग यहाँ आना चाहते हैं on visit visa और settlement visa. So first of all, you can come for 2.5 years. Two and a half first of years. all. So- But that 2.5 years, you can extend it as long as you want, and then after 5 years, you can apply for indefinite. It's still it's a route Same to route. settlement. Yeah, route to Yes. settle. So हांगकांग के जो हैं लोग जो यहाँ आना चाहते हैं, first you need to find out what kind of passport Your you own have. immigration status. आपकी Your own status within Hong Kong. कि हांगकांग में आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है. Are you only have the Hong Kong passport or Hong Kong overseas passport? अगर हांगकांग overseas passport है, then आप British यहाँ national overseas. ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज जी ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट है, तो आप यहाँ for 2.5 years you can come. Yes, 2.5 years. और उसके- Extendable. It's extendable. तो आप ये एक्सटेंडेबल वीजा है 2.5 year मिलेगा. एंड उसके बाद आपको जी आप इंडेफिनिट के And it लिए says after you've lived in the UK for 5 years, you can apply for indefinite. So it is a route to settlement. तो ये रूट टू सेटलमेंट का है. हांगकांग के जो लोग हैं जिनके क्वेश्चन आए थे कि 2.5 year के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए. और अगर आपके पास ब्रिटिश ओवरसीज हांगकांग का पासपोर्ट है तो उस पे आप अपनी इमिग्रेशन के थ्रू अपना चेक करें कि जो आपके पास पासपोर्ट है वो कौन से वाला है. ये हांगकांग के लोगों के लिए है. Yeah, so I think with that, that's the most. Yes. But if you come from Hong Kong Yeah. and you don't qualify Yeah. for the British National Overseas Visa, you can still come under the skilled worker route, Okay. and that would also lead you to settlement. तो अगर आपके पास जो है ओवरसीज पासपोर्ट नहीं है, आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं ऑन वर्क परमिट वीजा, और ये रूट भी सेटलमेंट तक आपको लेके जा सकता है. Yeah. She's saying, प्लीज हेल्थ केयर वीजा स्पॉन्सर करने वाली कंपनी से राब्ता करवा दे. जी मैंने आपको जो लिंक शेयर नहीं किए, ये वो लिंक हैं जहां जॉब्स अवेलेबल हैं, और ये वो कंपनीज हैं जहां वो जॉब जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं. आप वहां जाएं, क्लिक करें. अभी लिंक जो है शेयर कर दिए हैं. She's saying you are saying you are great, Sarsie. She's thank you. very cooperative lady. Thank you So so now much. let's come finally to the British citizenship. अभी हम because I British- think yes. people are waiting for that. Yeah. So British citizenship के बारे में हम बात करेंगे. Okay, so the new law that has come out for people who can apply for British citizenship. So it says for citizenship through a grandparent. अच्छा, grandparents through grandparents. Yes. Now the law itself says that if you make the application Yes. for the British citizenship and your background is such that you would have been British already. Yes. You would excepting for the application wasn't made at that time, you would have been British. Yes. Then you are entitled to make the British now. That's one condition. Okay. So one condition is historical legislative unfairness. Okay. So let's say, for example, your grandparents
your grandparent, this is just an example. Yeah. Your grandparent is British. Yes. So it should have passed down it means your parent would have been British, Yes. By descent. Yes. Now, you didn't qualify, but you would have qualified to be registered as a Okay. British citizen. But due to some error somewhere along the line, you were not registered as a British citizen. Yeah, then you can do that now. Okay. So जी जैसे कि सारसी बोल रही हैं फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जैसे माय ग्रैंडपेरेंट्स दे वर ब्रिटिश Yes. दे वर ब्रिटिश पर उन्होंने पास ऑन कर दी ब्रिटिश नेशनैलिटी टू माय पेरेंट्स Yes. बट दे कांट पास ऑन टू मी No, but you can register. पर हम स्टिल रजिस्टर हो सकते हैं करवा सकते हैं But due to something, the registration didn't go through when you were a child, well, up till now in your life, and then you want to do it now, then you can make that application. अभी आप एप्लीकेशन बना सकते हैं अगर आपने अप्लाई किया और आपको नहीं मिली सो द रूल्स हैव चेंज्ड यू सेड They've extended it a bit. उन्होंने एक्सटेंड किए हैं थोड़े से सो नाउ यू कैन अप्लाई Yeah. So they're saying that this rule came in force in 28th June 2022. That's what they're saying. तो ये 28 जून 2022 में ये रूल जो था नाफिज हुआ था कि जैसे अगर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ब्रिटिश हैं एंड देन थ्रू देम मेरे पेरेंट्स को ब्रिटिश नेशनलिटी मिली बट आई वाज इन पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री बट नाउ आई कैन अप्लाई आई कैन रजिस्टर माई सेल्फ मैं अपने आप को रजिस्टर कर सकती हूँ और ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल कर सकती हूँ And then, so this is very important for the lady who is asking about whether they can pass on British citizenship. Now, if your mother is in if your mother was in a position where she could have passed on the British citizenship to you at the time of your birth, that means if your mother had British citizenship at the time of your birth, then also you can apply. That's under Section 4C. That's Okay. another section. सो अगर जैसे ये सलमा और Before 1st January 1983. 1st of January 1983 before they were born from So is someone born before? So if you were born before 1983, so that's the first requirement. You have to be born before 1983. Yes. And then your parent Yes. should have been able to pass on British nationality to you at that time. Okay. So it would depend on the status of your parent. Is your parent a British national? If at that time your parent is a British national, then you would fall under Section 4C. जी तो आई थिंक ये सलमा आप लोगों के लिए है कि जब आप लोग पैदा हुए हैं तो आपकी मदर के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था वो ब्रिटिश नेशनैलिटी थी उनके पास तो आप लोगों को मिल सकता है बिफोर 1983 अगर आप उससे पहले की आप लोगों की पैदाइश है बिफोर 1983 यू वर बोर्न बिफोर और आपकी मदर के पास सो इफ शी हैड ओवरसीज पासपोर्ट लाइक यू नो द So yes. So if you had overseas passport, now overseas passport, unfortunately, is not British citizenship. ओके So when that passport came, it restricted when you were part of the Commonwealth, it was not restricted. You can come and go at any time. You were Okay. treated as British citizens. But the UK made that law to separate Okay. between British citizens and other citizens. ओके So now I need to establish, but at least I know where I stand. Yeah. Okay. I need to establish whether your mother actually had British citizenship at the time of your birth. That's the question that we need to find out now. Yes, so Salma, please, if you can, if you're listening to our live और सारसी को listen कर रही हैं, तो आप please बताइएगा we all born before 83. Yes, but आपकी mother, you're born 83. Yes, she was British. Yes. Yes. So if she has British citizenship, then it means you will qualify under 4C So under 4C आप qualified करते of हैं this new law that जो has come न्यू out. लॉ Yeah. अभी निकला है उसमें आप सबको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल सकता है सो देयर इज वन क्विक क्वेश्चन Yes. इफ अ पर्सन हैव अ स्वीडिश पासपोर्ट Swedish. Okay. yeah and she wants to immigrate to UK have business administration degree can easily pass the English test how and what possibility to move to immigrate to UK Okay, so Swedish if you passport. come from Sweden, then unfortunately, because of Brexit, now you're same like the rest of the world. okay There's no difference now. I tend to think, but this is just me thinking, that from countries who were formerly in the EU,
and the threshold will be lower. Yeah, but there's nothing in the immigration rules to say that. You have to do the skilled worker route or whatever route like everybody else. सो जी आपको स्किल्ड वर्कर या वर्क परमिट वाला रूट इख्तियार करना पड़ेगा क्योंकि यू आर द सेम ब्रेग्जिट के बाद जो है सिचुएशन सबके लिए उसी में आप शामिल हैं. सो दे सेइंग इफ फादर हैज द सिटीजनशिप but he's no more, he's died, so how can So if the father was British yeah at the time of your birth, yeah then it means you are British. yes. Whether your father is alive or not, you're British. So what you have to do is to prove that your father was British. So we would need your father's British passport, for example, or whatever you're going to use to show proof you have. Yes. So उमर अली आपके लिए ये है कि जब आप पैदा हुए तो आपके फादर जो थे वो ब्रिटिश सिटीजनशिप थी उनके पास जब आप पैदा हुए हैं और इधर आपके वालिद साहब जिंदा हैं या अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं. अगर आपके पास प्रूफ है कि उनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप थी आपकी पैदाइश से पहले तो आप ऑटोमेटिकली ब्रिटिश हैं. आप अपने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो ये रहा. तो दिस थिंग लव यू बोथ. थैंक यू सारसी एंड रोमा. थैंक यू. हम बहनों की तरफ से आपको और सारसी को शी टू गिव अ बिग हग. Me too. Yeah, thank you शाइस्ता. तो आप अप्लाई कर सकते हैं. If you want to apply through Sarsie, she's more than happy to help you out and help you guys with this. कि क्या पेपर वर्क चाहिए बट ऑब्वियसली देयर विल बी अ फी एंड चार्जेस. आपको बता रहे हैं बिकॉज सारसी ने अपना टाइम देना है. शी इज गिविंग फ्री एडवाइस फ्री हर टाइम कि ये आप लोगों को गाइड कर रही हैं 1 hour एंड जो लोग ईमेल करते हैं एंड शी इज गिविंग देम फ्री guidance as well. Yes. But now that I know where I stand with Hong Kong and the British nationality, now I'm able to go and help. Make application help. Yes, I'm able to help because now I know where I stand. So सारसी कह रही है कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन सारी ले ली है मतलब कि और पढ़ने में आप लोगों के क्वेश्चन जो किए उनकी इन्फॉर्मेशन लेने में भी काफ़ी टाइम जो है सर्फ होता है. ये नहीं कि you're a lawyer, you know everything on the spot. You have to do your study. I have to make sure. You have to make sure. Yes. Because I wouldn't want to give you wrong advice. Yes. But now I know how to guide you. So Sarsi बोल रही है now she know she have done her research. उनको पता है कि उन्होंने आपको कैसे गाइड करना है. Mrs. Malik saying we will contact her inshallah. Okay जी ठीक है. We will call her. शाइस्ता कह रही हैं. तो जी कोई बात नहीं. आई होप कि आप जो है अपनी मदर के पास यहाँ आ सकें, आप अपनी मदर को देख सकें और आपकी मदर जो है अपनी बेटियों को देख सकें, बेटियों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते एंड यू कैन क्रिएट नाइस मेमोरीज फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर मदर इंशाल्लाह. Okay. Then there's one thing that I wanted to mention. One client asked me about some information. So she gave me the information and said, but I don't want the Home Office to know. Yeah. Now, in our position, we cannot conceal information from the Home Office, which we know to be true. So once you tell us it's not true, but we want you to tell the Home Office, we can't do that because we have a professional duty to be truthful with the Home Office. हाँ जी. तो जी जो लोग आते हैं ना अपने केसेस लेके और कहते हैं कि जी you have to tell lie basically. Yes. तो सारसी ऐसे नहीं कर सकती इस प्रोफेशन में क्योंकि हर जॉब एंड इज बेस्ड ऑन ट्रूथ. वो नहीं झूठ बोल सकती, वो मिसगाइड नहीं कर सकती, वो रॉन्ग एडवाइस नहीं दे सकती. शी हैव टू बी गाइड यू एंड एडवाइज यू अकॉर्डिंग टू द जो रूल्स एंड रेगुलेशन है. वो आप अगर आप उसको कहते हैं कि डॉजी वर्क, नो I can't do it. I'm bound by the profession. I can't do it. तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप जो लोग सुन रहे हैं कि don't put Sarsie in this kind of difficult situation. Yes. So you know I will be so grateful and Sarsie क्योंकि वो हम आपकी help, we want to help you but in a right way. In a wrong right way जो है वो help नहीं होगी. So like, I have a British citizenship. Yes. By registration, living in Hong Kong. I am mother and child born 2013. Does she qualify? Okay, so you had it by registration. British citizenship by registration. So if you had it by registration, Yeah. then you can
Do you want to pass it on to your kids or yourself? What was the question? तो जी मोहम्मद आप जो है आपके so you but she saying I have British citizenship by registration. Yes. She got already. So what do you want to do now? Pass So- it on to your kid or come to the UK, or what do you want? What's your plans? So आपके actual question क्या है? I am mother of child born in 2013. Does she qualify? The child qualify? Yeah. Yes. Because the child is otherwise than by descent. So if you were by registration, Uh-huh. then it means you were not by descent. By descent. So if you were not by descent, Yes. then you can pass it on to your child. जी मोहम्मद you can pass it on to your child. British जो है easy है क्योंकि अगर आपके फादर के पास होती और आपको ब्रिटिश सिटीजनशिप थ्रू योर फादर मिलती देन आप नहीं पास ऑन कर सकते थे बिकॉज दिस ये रजिस्ट्रेटेड Yes. yeah So you've got registered है Yeah, so you've got citizenship by descent. Yeah. Goes only one time. Yeah. Everything else, every other British citizenship you can pass on. Yes. Only by descent you can't pass on. yeah so आपको by descent जो है only one time pass on कर सकते हैं Everything else. everything else अगर आप registered हैं then you can pass Naturalization, on registration, spouse, and then anything else yeah you can pass on. yeah so आपको मिल गई है अच्छा कुवैत से विजिट के लिए क्या करना if for the visit visa if you want to come from Kuwait what are the requirement Okay, so if you want to come, so for all visa applications, Yes. the Home Office needs to be satisfied you will go back. Yeah. So the more ties you have to your country, Yeah. the job that you have, the family that you have, the houses that you have, Yes. the businesses that you have, the more you can show that, the more it means you can go back. Home Office doesn't bother about the visit. Okay. They just don't want you to stay. okay So anything you think in your head, this will show the Home Office, I'm not going to stay. I'm not interested in staying in the UK. Yes. Will support your... तो जी विजिट वीजा का क्या मतलब है विजिट वीजा का मतलब है यू ओनली कमिंग हियर फॉर हॉलीडेज Yes, तो yes. आपने विजिट वीजे के लिए आपने पेपर वर्क में शो करना है आपकी बैंक स्टेटमेंट You got the money. मनी है और आपने आपके बैक होम जाने की रीजन होनी चाहिए लाइक यू हैव योर पेरेंट्स और यू हैव योर बिजनेस देयर यू गॉट योर जॉब देयर व्हाटएवर Yes. इज देयर आपको ये शो करना है एंड देन होम ऑफिस वाले ये चाहते हैं कि यू शो देम अ रीजन टू गो बैक बिकॉज वो नहीं ये चाहते कि आप आपके यहाँ के स्टे कर लें और उन पे बोझ बन जाए बर्डन बढ़ जाए उनका इसलिए विजिट वीजा रिजेक्ट होते हैं बट यू हैव टू शो प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट ये नहीं कि सडनली यू हैड 2 million pound Yes. कमिंग इन ग्रेजुअली 6 month की होनी चाहिए इन 6 month आपको शो करना चाहिए कि यू आर वर्किंग यू आर अर्निंग यू आर स्पेंडिंग एज वेल Yes. थैंक यू सारसी गुड सारसी फॉर टेलिंग द ट्रूथ सारसी जी सच ही बोलती है सारसी बिकॉज अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपका काम खराब होगा सच बोलेंगे देन अल्लाह भी आपकी जो है हेल्प करेंगे एंड द वन क्वेश्चन इज दिस अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम तो आपको बता दिया है सारसी ने और मैंने लिंक भी शेयर कर दिए हैं ऑन यूट्यूब एंड ऑन फेसबुक ऑन बोथ कि जहाँ जॉब्स की अवेलेबिलिटी है और आप अप्लाई कर सकते हैं आप अपने लिए टीचर के लिए या एनएचएस के लिए और आपको फीस भी सारसी ने बता दी है हाउ मच द चार्जेस फॉर द हेल्थ केयर के लिए भी और हेल्थ केयर की जॉब्स भी अवेलेबल है ऑन द लिंक्स व्हिच यू हैव शेयर्ड Yes, and plus what I've just told you right now. हाँ जी और जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है लव यू बोथ थैंक यू सलमा थैंक यू लव यू टू डार्लिंग You're welcome. सो ये रही जी आज की इन्फॉर्मेशन होप है कि आप लोगों ने ज़रूर इससे कोई कुछ गेन एंड जो है नॉलेज ली होगी एनी मोर क्वेश्चन जो है आप आस्क कर सकते हैं क्योंकि लिंक के बाद आपका अपना काम है वी हैव शेयर द लिंक देन इज नाउ इज योर जॉब टू एक्सप्लोर Yes, exactly. और सारसी ने लाइक आई सेड बिफोर शी हैव गिवन हर टाइम एक्स्ट्रा टाइम जहां उसने सर्च की है एंड देन बिकॉज ऑफ द डिमांड Yes, the questions that are coming in. Yeah, it was so high. Yes. Okay, let me go back to the question. Visit visa का process, how to process visit visa. जी आप लिबर्टी स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पर जाएं वहाँ कॉन्टैक्ट अस करें एंड कॉन्टैक्ट बॉक्स में क्लिक करें एंड यू कैन राइट योर नेम इन एनी इन्फॉर्मेशन यू नीड और वो जो है आपको विद इन 48 hours आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे I want to know that about I'm in UK and I have ILR and my husband in Pakistan and what passport my baby get after born in UK please answer this is Rabia Shahid Yes, as the baby is born British. so baby जी British होगा आपका Rabia Shahid baby will born British
If the baby is born, you can go to the passport, just fill out the form. I think it's 45 or 58 pounds, something like that. Yes. And within weeks, you get your British passport. हाँ जी, तो the child's British हाँ, passport. तो चाइल्ड का ब्रिटिश पासपोर्ट आ सकता है, पर उसके लिए I will say again, please make sure that you contact Liberty solicitors, because it's better to take advice on these Yes, things. yes, क्योंकि yes, आप yes, yes. अगर आपको information मिल रही है, you thinking we are getting the information so we can do things ourselves. What happens sometimes you make a mistake, Yes, and then yes. you regret for rest of your life. Yes, yes, So yes. आप Liberty solicitor से contact करें. I will share the information at the end Liberty solicitors की, तो आप उनसे contact कर सकते हैं. And to that question, if the child was not British, if you didn't have ILR, so the child was born first and you got ILR, then you can still register the child as a British. So it's still not too late. हाँ जी, तो आपको even before ILR or after ILR आपके बच्चा जो है आप So उसके लिए after ILR is British straight away. Before you can register, easy peasy. yes. तो I am Rizwana from Faisalabad. जी उमर हयात चाहिए 10 उमर हयात है. Housewife visit visa requirement, please. Okay, now if you're a housewife, then again, the visit visa requirements are the same. But if you're a housewife and you're not working, this is the way the Home Office minds work. It's likely they'll refuse the visa. Yeah, it's likely. Unless you can show a lot of money, a lot of kids, a lot of maybe you're in society, small groups, talking to women's group, this group, that, things that tie you to the country. Yes. So जी आपको basically you have to show a very good bank आपकी जो होनी चाहिए, money enough है कि आप यहाँ भी अपना जो है खुद गुजर बसर कर सकते हैं, and then you have still enough money left. What here people the government want to see that you have financially you have so You're much sound. Yes, Yeah. you're financially sound. Yeah. So if I come to UK on arrival visa on Swedish passport, can I search for a job there? If I find any like in preschool or any other places, can I convert my visa to work? You see, the thing is, if you're coming into the UK and you tell the officer there, I'm coming to look for a job, they wouldn't let you in. Okay. Because you're only allowed to come for everything apart from work. You're not allowed to, if you want to come for work purposes, then you have to pass through the route of everybody else. Yes. You can only come as a visit visa. हाँ जी, तो आप विजिट वीजे पे आ सकते हैं. आमना मसूद अगर Without a visit, you can only come for a visit. Visit. For that, you won't need a visa. You can pick up your bag and come for a visit, look around, and then go back. If you tell him you're going to visit. But if he has reason to believe that you're coming for any other reason apart from a visit, he won't let you in. हाँ जी, तो आमना मसूद आप विजिट वीजा पे आ सकते हैं. और अगर आप उसको बोलेंगे कि दैट यू अगर यू नो थ्रू द योर कमिंग इनटू दिस कंट्री, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे व्हाई आर यू कमिंग, तो यू से आई एम कमिंग फॉर टू विजिट, दे विल लेट यू इन. पर अगर आप उनसे बोलेंगे कि आई एम कमिंग हियर टू वर्क, वो आपको लुक फॉर वर्क, वो आपको स्ट्रेट अवे दे विल सेंड यू बैक ऑन द नेक्स्ट प्लेन basically. Exactly. तो ये so if she doesn't say I'm visiting but I'm not coming for visit, and then she come here, she change her mind, look for work. Well, then what the Home Office will say is that you deceive them. Deceive, हाँ धोखा दिया जी. फिर होम ऑफिस वाले कहेंगे कि आपने उनको धोखा दिया है, तो ये भी इट्स नॉट गुड. तो विजिट वीजा पर आए, और आप अगर अप्लाई करना है तो सेम रूट्स लाइक अदर पीपल, आई हैव शेयर द लिंक ऑलरेडी. वहां जाएं, लिंक पर शेयर करें, जॉब फाइंड करें, and then you can do proper. I mean, you can always come and look for the job and go back and apply. Yeah, आप विजिट वीजा पर आए, यहाँ जॉब ढूंढे और मिले लोगों से, and if they offer you the job within your visit, within your visit, if they offer you the job, you go back and tell them to because then you've left and then you're coming on the proper route. Yes. So I think Sarsie made herself very clear आप लोगों के लिए इधर. तो और I'm from Faisalabad and health जी, we have shared the link, तो आप उन लिंक पर जाके क्लिक करें, and then inshallah you will get your answers. Thank you so much. Please tell me work visa process, please. सारा इफ्तिखार वर्क प्रोसेस वीज़ा, आपको जो लिंक शेयर किए हैं, वी हैव शेयर द लिंक, आप उन पर जाएं. लुक, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, उस पे आप वो जो भी आप टीचर हैं या इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, हेल्थ केयर हैं,
उस डिपार्टमेंट पे जाके क्लिक करें एंड देन यू कैन फाइंड जॉब फॉर योरसेल्फ. तो चलें जी, इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे अगेन. द टाइम इज here for us to say bye bye. No! ये तो आप प्लीज, मैं शेयर करूंगी लिंक लिबर्टी सोलिसिटर्स का इंस्टाग्राम पर भी एंड उस पे यूट्यूब पर भी. आप जाएं और डायरेक्ट कांटेक्ट करें. और आई हैव जस्ट नाउ, ये देखें जी, मैंने लिंक शेयर कर दिया है और इस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन आप लिख के भेजें और सारसी गाइड से. लास्ट क्वेश्चन जी, हम Yes. लास्ट क्वेश्चन टेक करने लगे जी. ये कौन है? सकीना, मेरी अम्मी अब्बू भाई ने मेरे भाई ने है, एक बहन है अनमैरिड, पाकिस्तान अकेली है, मैं उसको कैसे बुलाऊं प्लीज? सो शीज ये, आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है? पहले सकीना आप ये बताएं, ब्रिटिश नेशनलिटी है आपके पास? तो आप ये क्वेश्चन ना सारसी को डायरेक्ट भेजें थ्रू लिबर्टी सोलिसिटर्स और वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कि आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, हाउ मेनी इयर्स यू बीन हियर, आप बेनिफिट्स पर तो नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं और आपकी जो फैमिली है पाकिस्तान में उनकी क्या सिचुएशन है कि शी इज वांट टू कम ऑन द विजिट वीज़ा और उसके पास बैक होम जाने की क्या सूरत हाल है. तो उसके मुताबिक सारसी आपको गाइड करेंगे. तो जी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगेन. Jazakallah khair. Okay, Sarsie. Yes, We're gonna yes, take a yes. leave. It was in the- lovely. It was Yeah, lovely. It was a yeah. lovely time. Yeah, so hopefully. Looking forward to seeing you next week. Yes, इंशाल्लाह. So next Wednesday आपसे मिलेंगे जी, सेम टाइम. और जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है एंड वो सारसी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज गो ऑन देयर वेबसाइट व्हिच आई हैव शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम, लिबर्टी सोलिसिटर्स. कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें एंड देन कॉन्टैक्ट सारसी. शी विल गेट बैक टू यू विद इन 48 hours. Thank you so much, Thank Sarsie. you. Thank you. Thank See you again. Thank you. See you again. See you. Bye Bye. 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 Bye bye Bye. bye. Bye.